Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Programming Repeater. This is a video continuation of our beginner in-depth guide to HTML. This is part 7 of our video. This is the end video of our beginner in-depth guide to HTML. As you can see on the title, we are going to learn today how we can introduce forms in our HTML websites, okay, web pages or websites. Okay, without any further delay, let's go to our uh, video. Okay, that is our points for discussion. Let's understand what are the points that we'll be discussing. जो हम लोग जानते हैं what are the points that we'll be discuss. Okay, the first point जो हम लोग discuss करेंगे is our introducing HTML forms. First of all हम लोग जानेंगे what is forms. Okay, what is form and how we can create form. The second point हम लोग जानेंगे forms के अंदर जो text field और attributes रहते हैं, basically about text area. ये second point basically about text area रहेगा. The third point is our input tag. हम लोग जानेंगे the different types of input tags in HTML form that can be used in HTML form. And the fourth point में हम लोग कहेंगे we'll check about checkbox and radio. But radio button इसमें हम लोग जानेंगे actually checkbox and radio button comes under input tag, input type tag. But I have make it in a separate point because I will be explaining you the difference between checkbox and radio button. Okay. And that fifth point will be our creating pop-up scrolling menu that is using our select tag. So by using select tag हम लोग कैसे अपना scrolling pop-up menu create कर सकते हैं. And again हम लोग अपना video conclude करेंगे with our that is questions and exercises. So without any delay, let's go to our point number one, that is our introducing HTML form. Okay, introducing HTML form. Okay, introducing HTML form. First of all हम लोग को जानना चाहिए what is a form. Okay, so an HTML form is a section of a document. ये एक section होता है, मतलब एक part of a document होता है जिसमें some containing special elements called controls. So इसमें some special elements रहते हैं, उसका नाम होता है controls. Basically controls रहता है check boxes, radio buttons, menus और various different types that will be covered up in this video. Okay. Okay, that particular used to collect user input. Okay, जो हम यूजर इनपुट देता है वो बेसिकली यूजली कलेक्ट करता है थ्रू द फॉर्म थ्रू द यूजिंग ऑफ स्पेशल एलिमेंट्स कॉल्ड कंट्रोल्स. Okay, now let us know how we can create the form. Okay, in HTML document forms are set between the form container tag. So basically हम लोग form container tag यूज कर सकते हैं. The form form एक container tag है. It is not an empty tag. You have to remember that the form container work as follows. Okay, आप देख सकते हैं form method, how to send action and URL of the script. Let's understand this both attributes. Basically form के अंदर two type of attributes रहते हैं, that is of method and action. In future videos हम लोग आपको दिखाएंगे another attribute that is ink type. Okay. So the first two that I'll be explaining is that form tag has two attributes, that is method and action. Okay. Okay. The method tag, the method attribute accept either post or get asset value. So post is used or get is used. Okay, there is two type of method that method attribute used is post or get. So post method is basically used to select passwords and send it to the database, to the web server. Okay, so the get is the get हम लोग use करते हैं for simple text, numbers and more. Okay, basically get method हम लोग यूज करने से आप लोग बेसिकली आप देख सकते हैं. फॉर एन एग्जांपल हम लोग अगर एक वेबसाइट लॉगिन करने के लिए जाते हैं, एक फॉर्म लॉगिन करने जाते हैं, तो उसमें गेट मेथड कभी भी अप्लाई नहीं होता है, उसमें हमेशा अप्लाई होता है पोस्ट. क्योंकि गेट हम अप्लाई होते हैं फॉर नॉन इनक्रिप्टेड things, that is free objects, we can say free objects, or post you can use for encrypted objects. Okay, the second point is the second attribute is action, which simply accept the URL for the script that will process the data from your form. Okay, ये मतलब कि एक्शन URL the script, जैसे कि इधर में और एक स्क्रिप्ट रहेगा. बेसिकली अभी के लिए आपको कोई जानना नहीं है, बस मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि फॉर्म का अंदर कौन से टाइप का एट्रीब्यूट रहते हैं. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू आवर एग्जांपल. दिस फॉर्म मेथड एग्जांपल. अभी के लिए मैं ये प्रैक्टिकली क्यों नहीं दिखा रहा, बिकॉज आई विल बी इंक्लूडिंग दिस इन आवर टेक्स्ट एरिया का फॉर्म में आप लोगों को दिखाऊंगा. सेकंड पॉइंट से आप लोग प्रैक्टिकली आप देख सकते हैं. सो नोट में आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है कि क्लियरली दैट यू कैनॉट नेस्ट फॉर्म विद इन वन अनदर.
इसमें इट इज़ नॉट पॉसिबल टू नेस्ट फॉर्म्स विद इन वन अनदर। जैसे कि हम लोग ऑर्डरली जैसे कि नेस्टेड बनाते, अनऑर्डरली जैसे नेस्ट बनाते, बेसिकली फॉर्म में ये अलाउ नहीं। सो यू नीड टू ऐड the entire form entire that is closing form for the first form before creating another one in the same document। अगर same document में दो फॉर्म रहे पर वो फर्स्ट फॉर्म क्लोज होना चाहिए और सेकेंड फॉर्म स्टार्टिंग एंड अगेन क्लोज होना चाहिए। सो ये बेसिकली दिस। So moving on to our second point that is our text field and attributes. Okay, text fields and attributes. So text field and attribute में रहता है text area. So to accept multiple lines of text from a user, feedbacks, error reports, etc., we use the text area tag within our form. So जैसे कि यूजर हम लोग जिसकी एंटर करते हैं, बेसिकली हम लोग एक फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, इसमें हम लोग अपना ईमेल डाल के ईमेल डाल के नेम डाल के एक फीडबैक फॉर्म लिख रहे हैं, जैसे कि इस वेबसाइट का आप लोग को कैसा लगा ये टॉपिक। जैसे कि बेसिकली जिसकी यूट्यूब में जो कमेंट रहता है, बेसिकली इट्स टेक्स्ट, इट्स यूजुअली अ टेक्स्ट एरिया। देन यहाँ पे एरर्स रिपोर्ट, जैसे कि एरर रिपोर्ट एक्सेट्रा हम लोग टेक्स्ट एरिया टेक्स्ट से हम लोग यूज कर सकते हैं इन आवर फॉर्म। So इसमें देखिए you can set this tag to control the number of rows and columns it displays, although it will generally accept as many characters as the user desire to enter। So basically हम लोग इसको अपना टेक्स्ट एरिया बॉक्स को हम लोग मैनिपुलेट भी कर सकते हैं यूजिंग आवर रोज एंड कॉलम attribute। ओके, इसको जानते हैं। लेट्स सी दिस। You can see the simple syntax that is text area name. The name is an attribute and is the attribute that is the variable name, rows and this is a number, columns and this is the number। Okay, let's understand this. What is attribute? Okay, notice that text inside text area tag works like pre-formatted text। pre-formatted text मैंने आप लोग को प्रीवियस वीडियो में भी बताया था pre-formatted text क्या है। तो आप लोग को अगर जानना है तो ये लास्ट वीडियो मेरा देख लीजिएगा, आप लोग को समझ आएगा कि प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट क्या है। मैंने आप लोग को एक्सप्लेन किया हुआ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग पार्ट में आप देख लीजिएगा। ओके, और ये फर्स्ट पॉइंट में द नेम एट्रीब्यूट हम लोग को जानना चाहिए ये नेम एट्रीब्यूट क्या है। सो द नेम एट्रीब्यूट इज अ वेरिएबल नेम फॉर द स्ट्रिंग ऑफ द टेक्स्ट। तो बेसिकली ये वेरिएबल नेम होता है फॉर द स्ट्रिंग ऑफ द टेक्स्ट। ओके, द सेकेंड वन इज आर रोज एंड कॉलम। मैंने आप लोग को जैसे कि बताया था कि रोज एंड कॉलम बेसिकली यूज टू manipulate the size of the text area box। Okay, so you can say rows and columns can accept different numbers to change the size of the text area box। Okay, the third point is our text area will also accept one other attribute that is called wrap। Wrap can be set to off, which is default if wrap is not included virtual or physical। इसके बारे में in future हम लोग briefly आप लोग को explain करूँगा। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू आवर प्रैक्टिकल। ये हम लोग जानते हैं टेक्स्ट एरिया कैसे होते हैं। ओके ओके, दिस आर बेसिक HTML स्ट्रक्चर। आप जैसे कि देख सकते हैं दिस आर टेक्स्ट एरिया एग्जाम्पल। अब देख सकते हैं ये बॉडी के अंदर मैंने एक फीडबैक फॉर्म रखा है दैट इज यूजिंग H3। आप लोग को मालूम होना चाहिए कि H3 और H3 क्या है, ये हेडर टैग है। अब अगर आप लोग को मालूम नहीं है तो मेरा प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं, मैं लिंक इन द डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा। द फर्स्ट एंड this is a paragraph tag। Please take a moment to tell us what you thought of a website। Your feedback is appreciated। So आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पैराग्राफ टैग या फिर br टैग अप्लाई किया। सो दिस एंटर योर कमेंट्स बिलो। ओके, नाउ दिस इज द मेन पार्ट। हम लोग जो आए ये टेक्स्ट एरिया दैट इज नेम। ये ओके, ओके, दिस इज द नेम that is comments as applied, column that is 30 and rows this is 10। So this is the placeholder, this is another attribute। So enter your comments। Okay, let's see its output, let's understand it। इसका आउटपुट देखते हैं। यू कैन सी, आप देख सकते हैं, ये देखिए आप यहाँ पे ओके लेट मी जूम इट मोर। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एक टेक्स्ट एरिया बॉक्स की तरह आ रहा है। इस टेक्स्ट का अंदर आप लोग एनी टाइप ऑफ वैल्यूज डाल सकते हैं, एनी टाइप ऑफ वैल्यूज इसमें एंटर डाल देते हैं। जिसकी प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट में मैंने आप लोग को एक्सप्लेन किया था, प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट। देखिए प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट और सॉरी टेक्स्ट में मैंने आप लोग को एक्सप्लेन किया हो। ये प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट यू कैन राइट डिफरेंट टाइप। ओके, यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट राइट। ये टेक्स्ट एरिया काम है। अब देख सकते हैं मैंने आप लोग को प्लेस होल्डर में लिखा हुआ है। सो प्लेस होल्डर एंटर योर कमेंट।
बेसिकली ये एक हाईलाइट करते हैं कि यहाँ पे आप लोगों को क्या एंटर करना है कॉम्बिनेशन। अगर आप ये एंटर करेंगे तो ये प्लेस होल्डर अपने आप से गायब हो जाएगा। ओके, सो दिस इज द रोज। अगर आप रोज चेंज करना चाहते हो, जैसे कि मैंने इसको रोज 50 दे था, यू कैन सी इट बिकम लॉन्गर, और एल्स यू कैन चेंज इट फिजिकली फ्रॉम दिस। ओके, आप देख सकते हैं चेंज इट। आप ये पे राइट साइड लेफ्ट बटन में आप देख लीजिए, यहाँ पे एक ऑप्शन है चेंज करने के लिए। ओके, ना आप लोग को टेक्स्ट एरिया का मालूम चल गया होगा, टेक्स्ट एरिया क्या काम करता है। नाउ मूविंग ऑन टू आवर सेकंड पॉइंट इज, लेट्स सी व्हाट इज इट। ओके, द इनपुट टैग। हम लोग जानेंगे इनपुट टैग कौन से तरह के डिफरेंट टाइप ऑफ इनपुट टैग्स है। Okay, these are the different type of input tag. That is, the input tag is an empty tag. First of all, हम लोग को जानना चाहिए input tag is basically an empty tag होता है। ये it is not a container tag. So the input tag specify an input field where the user can enter the data. So basically मैंने आप लोग को controls बताया था जो special elements है। ये input tag ये जो user का data enter करने के लिए use होता है। So basically these are the different type of input tag. Input type है एक attribute। Okay, you see the input element can be displayed in several ways depending on the type attribute. So अपना टाइप एट्रीब्यूट से ये बेसिकली डिफाइन करता है अपना इनपुट टेक्स्ट को। सो लेट्स सी इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट। सो बेसिकली इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट इट्स अ डिफॉल्ट फॉर्मेट। ये अगर आप लोग सिर्फ इनपुट लेने से भी डायरेक्टली ये फॉर्मेटेड इन टेक्स्ट आएगा। द सेकंड वन इज आवर इनपुट टाइप नंबर। let me highlight this. Okay, it's the input type number. Okay, इनपुट टाइप नंबर, यहाँ पे नंबर से आप वैल्यूज इंसर्ट कर पाओगे। एंड इनपुट टाइप ईमेल, सेकंड इज आवर इनपुट टाइप ईमेल, और थर्ड इज आवर इनपुट टाइप ईमेल, सॉरी। एंड फोर्थ इज आवर पासवर्ड। आप लोग यहाँ पे अपना पासवर्ड एंटर कर सकते हो इन इनक्रिप्टेड फॉर्मेट। इट विल नॉट बी विजिबल टू द फ्रंट एंड। ओके, यहाँ पे हिडन, ये एक हिडन बॉक्स रहेगा। दिस इज द फाइल। बेसिकली हम लोग फाइल चूज कर सकते हैं, जैसे पीडीएफ, इमेजेस, डिफरेंट टाइप्स, राइट। तो चेक बॉक्स एंड वीडियो, मैं इसको नेक्स्ट पॉइंट में एक्सप्लेन करूंगा। देन बटन, देन सबमिट, देन रिसेट, टेलीफोन, देन डेट, टाइम एंड वीक। सो लेट्स सी प्रैक्टिकली ये लोग को हम लोग जानते हैं प्रैक्टिकली कैसे तरीके के ये आउटपुट शो करते हैं। ओके, ओके, आप लोग अगर स्क्रीन को देख पा रहे हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इनपुट टैब का एग्जांपल मैंने रखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने रखा है फॉर्म एक्शन। देखिए मैंने फॉर्म एक्शन यूज किया। फॉर्म एक्शन देन इज एम्प्टी, देन मेथड पोस्ट। ओके, नाउ यू कैन सी इधर में आप देख सकते हैं लेवल फॉर। तो लेवल फॉर बेसिकली मतलब कि आप लोग जैसे एक्सप्लेन करो, यहाँ पे भी लिख रहा है द एलिमेंट रिप्रेजेंट ए कैप्शन इन ए यूजर इंटरफेस। तो बेसिकली इट इज अ कैप्शन, जो कैप्शन रखता है ना, जिसकी मैंने आपको कैप्शन टैग बताया। तो लेबल टैग इज ऑल्सो अ कैप्शन tag. It is similar to a caption tag. Okay, now let's see is this for the name। हम लोग को नेम के लिए इनपुट क्या रखा था मैंने, नेम टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, देन नेम इक्वल टू टेक्स्ट। ओके, ये आप लोग सेम रखना नेम एट्रीब्यूट टेक्स्ट को, बिकॉज इन फ्यूचर आप लोग को क्या बोलते हैं इसको, पीएचपी में आप लोग अगर वेबसाइट क्रिएट कर रहे होंगे तो ये एट्रीब्यूट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। सीएसएस में भी आई विल शो यू इन द फ्यूचर वीडियो। सो प्लेस होल्डर मैं आपको एक्सप्लेन किया था प्लेस होल्डर क्या है। Then size, you can manipulate the size of the box, and you can manipulate the size of the length, or how much text you need to insert. This is called max length, and this is autocomplete। So autocomplete basically जैसे कि हम लोग लिखते हैं मेरा नाम गिफ्टी टॉप। तो बेसिकली मैंने अपना फॉर्म सबमिट कर दिया। तो बेसिकली फिर से हम PRI लिखने के बाद वो TOM बेसिकली डायरेक्टली आ जाएगा। ओके, आई विल शो यू। ओके, अब देखिए ना दिस इज द आउटपुट। ये नेम के लिए आ रहा है, देखिए एंटर टेक्स्ट इज द फर्स्ट वन, नेम। अब यहाँ पे देख सकते हैं द मैक्स लेंथ दरा है मैंने आप लोग को दिया था इज 15, राइट। सो लेट्स काउंट 15 कैरेक्टर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 हो चुका है ना। नाउ लेट्स सी 16 में क्या होता है। ठीक है, मैं एंटर कर रहा हूँ पर ये एंटर नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने इधर में मैक्स लेंथ 15 दिया है। तो मैक्स लेंथ का काम है basically enter the required amount of text और numbers। ओके, आप देख सकते हैं अगर मैं इसको 50 दूँ तो 50 दूँ तो ये कंटिन्यूसली टाइप होते जाएगा।
ये कंटिन्यूसली टाइप होते जाएगा। राइट, बेसिकली इसको शॉर्ट रख लेते हैं, फॉर्म में तो ज़्यादातर शॉर्ट रखते हैं। नाउ अंडरस्टैंड इट, इज द प्री टैग आई हैव यूज फॉर द ब्रेक ऑफ द लाइन। ब्रेक लाइन के लिए, लाइन ब्रेक के लिए मैंने अपना प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट यूज किया। सो दिस इज सेकेंडरी फॉर नंबर, नंबर में जाने के लिए, तो सो दिस इज अ लेवल फॉर नंबर। ओके, इनपुट टाइप नंबर, यू कैन सी नेम, नंबर, देन प्लेस होल्डर, एंटर योर नंबर। तो आप यहाँ पे नंबर पे देखिए, अगर इसको आप होवर करते हैं इस बॉक्स में, आप देख सकते हैं यहाँ पे साइड में एक एरोस दिखा रहा है, यहाँ से आप अपना नंबर सिलेक्ट कर सकते हैं, और या फिर आप लोग थ्रू द कीबोर्ड आप लोग लिख सकते हैं एनी वैल्यू। ओके, क्या आई जस्ट गिव माय नेम ओके। ओके, तो यहाँ पे ईमेल दिख रहा है, फर्स्ट द नंबर वाला कंप्लीट हो गया। नाउ थर्ड इज आवर ईमेल। ओके, आप ईमेल में देख सकते हैं इनपुट टाइप ईमेल। ओके, email, that is name, email, placeholder, enter email, then auto complete off। ओके, अभी इसको देखते हैं, ईमेल अगर एंटर किए तो अगर मैं इसको फॉर्म सबमिट करूँ तो क्या होगा। यू कैन सी, आप लोग इधर में दिख सकते पा रहे होंगे, प्लीज इंक्लूड, ओके सॉरी अगेन, प्लीज इंक्लूड एन एट इन द ईमेल एड्रेस। ओके, इस मिसिंग एन एड्रेस। तो ईमेल में बेसिकली हम लोग यूज करेंगे एड्रेस यूज करेंगे। आप देख सकते हैं एड्रेस, देन जीमेल email.com। अगर हम लोग इसको सबमिट करें तो बेसिकली इट गोस टू द, बस अगर ये सबमिट हो रहा है पर हम लोग एक्शन में इसको सबमिट के लिए कुछ भी नहीं रखा है, एक्शन इज एम्प्टी, सो बेसिकली ये रिडायरेक्ट हो रहा है टू इट्स फॉर्म। ओके, अपना देख सकते हैं, देन पासवर्ड, पासवर्ड कम्स इन इंक्रिप्टेड फॉर्मेट, दिस इज द फाइल, दिस इज द हिडन, जो आप लोग हिडन को नहीं दिख पा रहे होंगे, देन फाइल, दिस इज द फाइल, आप देख सकते हैं यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं एनी फाइल, सो आई चूज अ फाइल लाइक दिस द इमेज। तो मैं ये इमेज को देख सकते हैं, आप इमेज का फाइल चूज कर सकते हैं, any image file। This is the telephone number, telephone number, you can use telephone number, it's depend upon you, anything। ओके, यहाँ पे आप डेट चूज कर सकते हैं, डेट, टाइम, वीक। ओके, लेट्स सी दिस, डेट के लिए और टेलीफोन के लिए आप देख सकते हैं, वन मोमेंट, फाइल के लिए यूज किया मैंने फाइल, दैट इज इनपुट टाइप फाइल, देन नेम फाइल। टेलीफोन के लिए मैंने यूज किया इनपुट टाइप टेल, डेट के लिए मैंने यूज किया इनपुट टाइप डेट, लेवल फॉर वीक मैंने यूज किया, सॉरी फॉर टाइम मैंने यूज किया टाइम, देन वीक के लिए वीक यूज किया, देन रिसेट बटन मैंने यूज किया। सो रिसेट बटन क्या काम करता है, बेसिकली रिसेट बटन काम करता है जो भी इंसर्टेड वैल्यू है उसको रिसेट कर देता है टू इट प्रीवियस, टू इट्स नॉर्मल फॉर्म। ओके, जैसे कि मैंने इसको एंटर किया, एनी नंबर ऐड किया। ओके, आप देख सकते हैं। ओके, अगर मैं इसको रिसेट करूँ तो क्या होगा, रिसेट करूँगा तो ये पूरा रिफ्रेश हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं रिसेट करूँ तो ये पूरा रिफ्रेश हो जाएगा। तो रिसेट बटन का ये काम है। और सबमिट बटन, बेसिकली सबमिट बटन क्या करता है, जो ये वैल्यू है ना, सबमिट बटन वैल्यू मतलब कि यहाँ पे आप मैंने जो लिखा है वैल्यू, यू कैन सी, यू कैन चेंज फ्रॉम हियर, आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड में वो प्रीव्यू ऑप्शन में, यू कैन राइट एनीथिंग और सीजर। वैल्यू में मैंने आप बस सबमिट रखा हुआ है। एंड अगर मैं इसको नेम में रखूँ, नेम में इधर में हम लोग क्या रखना है, इसमें सबमिट रखना है, राइट। इधर में हम लोग सबमिट रखेंगे, ये अगर नेम इक्वल टू सबमिट, ये हम लोग अपना पीएचपी में देखेंगे कैसे हम लोग एक्शन के थ्रू हम लोग रिकॉल करेंगे इसको, तो इसको फैच करेंगे। सो अभी के लिए आप लोग को सिर्फ स्ट्रक्चर जानना चाहिए कि इनपुट टाइप रिसेट होता है, इनपुट टाइप सबमिट होता है, इनपुट टाइप बटन होता है। ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट टैग्स होता है, बेसिकली हम लोग इसको जान रहे हैं, इसको स्ट्रक्चर को जान रहे हैं, हाउ इट लुक्स एंड हाउ इट वर्क्स। ओके, so moving on to our next slide is our, okay, checkbox and radio। मैंने आप लोग को इनपुट टाइप में चेकबॉक्स एंड रेडियो बॉक्स, रेडियो बटन मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं किया था बिकॉज ऑफ दिस फॉलोइंग रीजन, लेट मी एक्सप्लेन इट।
सी चेकबॉक्स में आप देख सकते हैं checkbox means okay this is the checkbox okay this value for type allow you to create checkbox style interface for your form. This is best used when there are two possible values for a given choice and no other okay यहाँ पे अगर two possible values हो या फिर more than two आपको कोई सिलेक्शन करना हो तो ये चेकबॉक्स इज यूज टू सिलेक्ट टू और मोर items okay for two or more items. The programmer can also determine whether or not a checkbox will already be checked, so it must be unchecked by the user if desired by using the attribute checked okay हम लोग अगर attribute check बटन यूज करते हैं तो checkbox बेसिकली आगे से मतलब कि चेक रहेगा मतलब कि एक टिक रहेगा ओके Okay, now the radio button हमको जानना चाहिए radio button क्या काम करता है. So radio button is designed to accept only one response from among its options. So basically radio button use to select only one option. जैसे कि चेक बॉक्स में आप लोग को देखे आप लोग को प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि जब चेक बॉक्स में बेसिकली हम लोग सिलेक्ट करते हैं मल्टीपल आइटम हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं बट रेडियो में हम लोग मल्टीपल आइटम कैन नॉट बी सिलेक्टेड ओके वी कैन यूज ओनली सिंगल item okay we can select only single item so radio uses the same at the basic format as checkbox so attribute में हम लोग check भी use कर सकते हैं so now let's move on to our editor and let's understand it okay आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे okay this is an HTML basic structure this is the form for the checkbox okay this is the input type checkbox the name go to duo check this is the attribute I have given check and this is the label for go to duo this is the input type checkbox pentium okay let's preview this आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं टाइप ऑफ कंप्यूटर यू ओन टाइप ऑफ कंप्यूटर यू ओन अब देख सकते हैं यहाँ पे मैंने मल्टीपल क्लिक हो रहा है अनक्लिक भी हो रहा है यू कैन अनक्लिक मैंने जैसे कि आप लोग को बताया था ये चेक ऑप्शन आप लोग रख सकते हैं ये चेक एट्रीब्यूट बेसिकली अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो बेसिकली ये चेक आगे रहेगा ये आप लोग अंडू भी कर सकते हैं अगर मैं इसको चेक ना रखूँ तो क्या होगा ये टिक ऑप्शन नहीं आ रहा है ऑप्शन तो बेसिकली चेक बटन आगे से रखना है डिपेंड अपॉन यू नंबर 2 point is our okay let's understand our radio so हम लोग को रेडियो जानना है सो बेसिकली यहाँ पे रेडियो में आप देख सकते हैं कोटू डुओ पेंटियम सेलेरन राइजन ओके मैं यहाँ पे सब एक साथ सिलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि रेडियो बटन कैन ओनली बी सिलेक्ट ओनली फॉर वन आइटम ओके यहाँ पे आप देख सकते हैं चेकबॉक्स में बेसिकली मैं सब सिलेक्ट कर पा रहा हूँ पर यहाँ पे रेडियो बटन में मैं अपना ये सब आइटम सिलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ सो रेडियो बटन का काम है to select only singular item and this is like to select one or two or more items okay for we call a checkbox okay तो आप लोग को checkbox और रेडियो बटन में differentiation मालूम हो चुका होगा so let's move on to our next part that is our creating pop-up and scrolling menus okay so creating pop-up and scrolling menu so हम लोग जानेंगे कैसे हम लोग pop-up and scrolling menus create कर सकते हैं so the first step is our select text so select text is used to create different types of pop-up and scrolling menu so हम लोग को मालूम हो चुका है कि select text हम लोग यूज करते हैं अपना creating pop-up and scrolling menus यूज करने के लिए so the select text require a name so basically select text requires a name attribute and allow you to decide how many options to display at once with size attribute so basically नेम एट्रीब्यूट एंड साइज एट्रीब्यूट हम लोग यूज करके अपना सिलेक्ट टैग को हम लोग अपना रिक्वायरमेंट दे सकते हैं सो वी कैन यूज सिलेक्ट विद ऑप्शन ग्रुप tag and option tag okay basically these are the tags that will be seen practically so one more attribute for the select tag allow user to select more than one option from the menu okay using the multiple attribute forces the menu to display in its entirely regardless of the size of that अगर हम लोग साइज एट्रीब्यूट यूज करें सिलेक्ट टैग में अगर हम लोग मल्टीपल एट्रीब्यूट रखें तो इस साइज एट्रीब्यूट इज नॉट रिक्वायर्ड ओके अगर साइज एट्रीब्यूट भी दे तो साइज एट्रीब्यूट कट हो जाता है मतलब कि वो फॉर्म से कट हो जाता है सो लेट्स सी ओके दिस इज इट लोग देख सकते हैं दिस इज द फॉर्म let's preview it first and let's explain it together okay आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉर्म एक्शन दिया मेथड पोस्ट एज यूजुअल
So this is the choose your favorite food. This is the choose your favorite food. Then select मैंने रखा है name food. So मैंने एक name रखा है that is vegetarian and non-vegetarian. Okay, this is the option group label that is vegetarian. So let's see option group vegetarian basically it highlights the text. Okay, आप देख सकते हैं इसे वेजिटेरियन का ग्रुप का अंदर मेरे ऑप्शन का अंदर पिंटो पोसेल दाल एंड पूरी सब्जी रखा है. ओके, दिस इज सिंपल एग्जांपल. ये देखिए ये ऑप्शन रखा है, ये ऑप्शन ग्रुप. सो ऑप्शन ग्रुप बेसिकली ऑप्शन बेसिकली कम्स अंडर ऑप्शन ग्रुप एंड इट ऑप्शन ग्रुप कम्स अंडर द सिलेक्ट टैग. ओके, या फिर आप इस कैंसिल आउट कर सकते हैं. ओके, यू कैन कैंसिल आउट दिस. लेट मी शो यू. अगर हम लोग इसको कैंसिल आउट करें तो क्या होगा? You can see directly pinto postal dal and puri sabji aa raha hai. No vegetarian label नहीं आ रहा है. So basically is that okay? The option group is used to label that uh, label the what it's called the select tag. Okay, it basically labels the select tag. आप देख सकते हैं यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं. सो इट इज सिंगुलर सिलेक्शन. यहाँ पे आप देख सकते हैं यू कैन ओनली सिलेक्ट वन. You cannot select multiple items. This is I'm trying to select multiple items, but it's not possible to select multiple items. So this is used for multiple items. We will be talking about this is the multiple items. Okay, as you can see, अब मैंने आप लोग को दिखाया select name cards multiple. यहाँ पे मैंने आप लोग को मल्टीपल नहीं रखा. अगर मैं इसको मल्टीपल रखूँ तो क्या होगा? मल्टीपल रखूँ तो इसको भी मैं सिलेक्शन कर पाऊंगा, बार बार सिलेक्शन कर पाऊंगा. सो गेट डिफरेंट राइट. तो बेसिकली ये फॉर्म के लिए दिस इज फॉर अ मेनू. अगर हम लोग इसको क्लिक करें तो एक लिंक में भी जा सकता है. इसको लिंक में भी हम लोग डाल सकते हैं, इमेज डाल सकते हैं. इट डिपेंड अपॉन यू. ओके, हम लोग फाइनली हम लोग एक प्रोजेक्ट बनाएंगे. हाउ कैन इम्प्लीमेंट ऑल दिस विदाउट CSS. ओके, आप लोग देख सकते हैं व्हाट टाइप ऑफ कार डज योर फैमिली ओन. सिलेक्ट एज मेनी एज अप्लाई. यहाँ पे आप लिख पा रहे हैं. सो दिस इज द सिलेक्ट नेम कार मल्टीपल. Multiple. Okay, this is the option value that is Renault. Then option value 2 is our Auto 800. Option value 3 is our Centro. Okay, this is our Centro. Option value 4 is our Wagon. Okay, then this is our option value is our Bolero. Okay, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं. मैं इसको मल्टीपल सिलेक्ट करूंगा. यू कैन सिलेक्ट दिस, यू कैन सिलेक्ट दिस, यू कैन सिलेक्ट वेगन, यू कैन सिलेक्ट बोलेरो, then select Centro. If you want to undo this, you can again click on those. Okay, so basically ये multiple checks होते हैं. Basically you can uh, select multiple. Okay, multiple types of names for the select group. तो आप लोग को मालूम हो चुका होगा कि कैसे हम लोग बनाते हैं इसको. Okay, this is the select option. So let's move on to our next part, that is our. Okay, we have come to our questions and exercises. Let's understand our question and exercises. Okay, one moment. Sorry guys, I have flu. Okay, it's been today I just got the flu. Okay, okay, never mind. Let's go to our questions. Okay, let's understand our questions. Okay, first of all, what are the two values for the form attribute method which are you are most likely to use? So method में कौन सा हम लोग attribute use करते हैं? कौन सा method is post and get. Okay, what does the action attribute accept? So as action attribute accept क्या करता है? It basically accept the URL of the script. So what is the text area form element used for? How does the user enter data? So text area form element use होते हैं क्यों? Basically हम लोग feedback form use कर सकते हैं. Basically error report के लिए use कर सकते हैं. How does the user enter data? The user enter data in the pre-formatted text. Okay, जैसे pre-formatted text हम लोग जैसे भी सीखा था वैसे user अपना enter करते हैं. नंबर 4 में हम लोग देखेंगे टेक्स्ट एरिया. टेक्स्ट एरिया इज अ कंटेनर टैग. व्हाट डज इट कंटेन? सो टेक्स्ट एरिया से हम लोग को पता है कंटेनर टैग है, पर इसमें क्या है, इसमें क्या कंटेंट होता है आप लोग को ये मालूम होना चाहिए. बेसिकली कंटेंट कमेंट्स राइट. नंबर 5 में देख सकते हैं वाई शॉर्ट ऑफ एलिमेंट इज टाइप as it relate to the input tag. Okay, why sorting of element is type as it relate to input tag. And the sixth one is our aside from how they look, what is the major difference between checkboxes and radio बटन. मैंने आप लोग को कुछ बताया था कि डिफरेंस बिटवीन चेकबॉक्स एंड रेडियो बटन इज दैट चेकबॉक्स में आप लोग मल्टीपल आइटम्स को सिलेक्शन कर सकते हैं
in radio you can only select one item at once. Okay, so number 7 is our how do you define a checkbox or radio button as the default value. आप लोग कैसे checkbox और radio button को default value में कैसे use कर सकते हैं by using checked attribute. Number 8 is our how do you tell the HTML form to send it data to the web server. HTML form को अगर हम लोग use करते हैं by using our submit button. Number 9 is our what type of interface element does the select text display. What type of interface element does the select text display, आप लोग को ये आंसर करना है. Number 10 is our like if you use the attribute multiple with the select tag, what happened to the way menu display. इसको कैसे डिस्प्ले करते हैं, यहाँ पे सिलेक्शन मेनू बार होता है या फिर स्क्रोलिंग बार होता है. Number 11 is our how do you define the default value in a select menu. How do you define the default value in a select menu? Okay. Now let's move on to our exercises. The first exercise that we will be creating is create a simple form that let your user send you an email message. So मैंने आपको हिंदी दिया है यहाँ पे देखिए. You can use the mail to type of URL to actually cause the form to mail the form data to your email. मैंने आपको बताया था कि how you can to use mail to function कैसे हम लोग मेल कर सकते हैं. So using HTML using मैं आप लोग को वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. आप लोग वीडियो चेकआउट कर सकते हैं या फिर मैं प्लेलिस्ट में डाल दूंगा ये बिगिनर इन डेप्थ गाइड टू HTML वाला. Okay, the second one is our create a form that offers the following choices in a pop-up menu. There is a series of radio buttons and a list of checkbox. Make a different value the default in each. The choices are north, south, east, and west. Okay, create this thing. Number third is our using a select menu. Create two different menus of the following items. Make one pop-up menu and the other a scrolling menu. The choices are life, birth, liberty, happiness, death and taxes. So basically आप लोग को ये 3 exercises बना के रखना है. अगर आप लोग को नहीं आता तो you can directly DM me on my Instagram. मैं इसका solution आप लोग को दे दूंगा, इसका course आप लोग को दे दूंगा. So without anything to say, yeah, we already come to our part, we already come to the end of this video, and you also come to the end of our beginner in-depth guide to HTML. So we will be moving on to our intermediate in-depth guide to HTML, and we will also talk about CSS in our future videos. So basically give me some 2 days. मैं आपको एक project दिखाऊंगा using only HTML. I'll share the codes with you also, and आप लोग next video में मैं आप लोग को दिखाऊंगा कि using only HTML आप लोग कैसे हम लोग एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, एक बेसिकली वेबसाइट फुली फंक्शनल वेबसाइट बनाएंगे by using only this beginner in-depth guide text, HTML text that we have seen throughout this video, that is from part 1 to part 7. If you want to recheck all these videos, you can check it. I'll put in my playlist. Okay, you can check that. आप लोग इधर में देख लीजिएगा, आप लोग फिर से रिविजन कर सकते हैं. And with that, I will conclude this video, and thanks for tuning in. I will see you tomorrow. Okay, for more exciting videos, do like, subscribe, share, and comment. Okay, thank you everyone. Have a wonderful day.